vehicle. At this instant, the launch vehicle would have reached an altitude of 51 kilometers. SATVC BPV open. Soon afterwards, the second stage ignites and carries the rocket up to 169 kilometers altitude in its operational time of 152 seconds. During the operation of second stage, the launch vehicle clears the dense atmosphere, so the closed loop guidance is initiated and the payload fairing is separated. The third stage ignites soon after the separation of second stage. After operation of 120 seconds, the PS3 burns out but continues to coast along for another 200 seconds. By this instant, the altitude of the launch vehicle is 335 kilometers. The fourth stage, PS4, together with the payloads, continue to coast for another 263.3 seconds. After the burnout of the third stage, coast phase adds an altitude of 244 kilometers to the launch vehicle, while its relative velocity reduces a little. The fourth stage ignites at 14 minutes into the flight and operates for 272 seconds, during which the orbital conditions are achieved for the ignition of prime satellite DS-SAR and 6 co-passenger satellites. The intended orbit is 6,914 kilometers circular orbit at 5 degrees inclination. The order of separation of other satellites is Neolon, orbit 12 Strider, followed by Glacia, then the Scoop 2, then Arcade, and finally Velox AM. Thereafter, the upper stage is maneuvered to a lower orbit. -7 minutes. अब हम उड़ान से 7 मिनट की दूरी पर हैं। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। यह करीबन 14 मिनट चलता है और इस दौरान पायरो लाइन्स को सेफ से आर्म मोड में लाया जाता है तथा सभी संचार तंत्रों की आंतरिक जांच की जाती है। जैसा कि हमने बताया, PSLV प्रमोचन यान की कुल 57 उड़ानें हो चुकी हैं। यह 58वीं उड़ान होगी। PSLV की उसकी विश्वसनीयता के कारण इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। यह विश्वसनीयता सिर्फ प्रमोचन यान की नहीं बल्कि उस वैज्ञानिक, तकनीकी तथा व्यवस्था तंत्र की भी है जो हर बार इस मिशन को सफल करने में सक्षम है। PSLV रॉकेट की विश्वसनीयता गुणांक 97.6% है। हर एक सफलता के पश्चात इस गुणांक में वृद्धि होती रहती है। External power is withdrawn, vehicle is fully internal battery power. PSLV न सिर्फ विश्वसनीय है, यह बहुमुखी भी है। प्रथम चरण के प्रणोदानुसार PSLV 4 मुख्य संरूपण में है, PSLV XL, QL, DL तथा CA, जिसमें क्रमानुसार 6, 4, 2 और 0 स्टेप ऑन मोटर्स संलग्न रहते हैं। वर्तमान प्रमोचन यान PSLV-C56 CA कोर अलोन संरूपण वाला यान है। We are close to 5 minutes from the launch. As a matter of fact, the uppermost stage of the rocket usually goes into the same orbit as the satellite the mission injects. The fuel left unused in the stage is vented and the stage is passivated. Passivation is a process of removing stored energy from space vehicle to reduce the risk of high energy release such as explosions or fragmentations. However, the spent stage is an orbital debris itself. The orbital lifetime of the debris is very long in certain orbits. As a responsible space agency, ISRO is carrying out a change in the orbit of fourth stage after the accomplishment of mission. From 536 kilometers altitude, the fourth stage, PS4,
will be brought down to about 300 kilometers altitude by firing the orbit Minus change 4 thrusters minutes. twice. First firing is scheduled 45 minutes into the flight and second firing is scheduled 90 minutes into the flight. The re-entry into Earth's atmosphere from 300 kilometers altitude is likely to be in the order of weeks or a month. Though the burns of OCT will be tracked by While ISRO's batteries are ground on. stations, the live transmission will not be available for the viewers. On-board computers in flight mode. सभी दर्शक प्रतीक्षा में इस प्रमोशन के। अब हम प्रमोशन से 3 मिनट 20 सेकंड की दूरी पर हैं। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू होने के पश्चात रॉकेट पूर्णतः स्वचालित होकर अपना आंतरिक जांच जारी रखता है तथा T0 पर या Minus 3 T minutes. माइनस 0.3 सेकंड्स पर सर्वप्रथम RCT का प्रज्वलन हम देखेंगे और तत्पश्चात T0 पर कोर बूस्टर S139 सॉलिड बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा। We are 2.5 minutes from the scheduled launch time and the eagerness building up in the control center here. जैसा कि आपको बताया गया, इस प्रमोशन मिशन में सभी 7 उपग्रहों के प्रमोशन के पश्चात PSLV-C56 के चतुर्थ चरण को उसमें लगे ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स को प्रज्वलित कर उसे 536 किलोमीटर की कक्षा से 300 किलोमीटर की Minus कक्षा 2 वृत्ताकार minutes. कक्षा में 2 चरणों में लाया जाएगा। यह प्रयोग भावी मिशन के डी ऑर्बिट सीक्वेंस के तकनीक प्रदर्शन के रूप में किया जा रहा है। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस सुचारू रूप से जारी है। सभी गतिविधियां सामान्य संतोषजनक तरीके से पूर्ण हो रही हैं। अब हम प्रमोशन से 1 मिनट की दूरी पर Minus हैं। 1 minute. Minus 55 seconds. All SHARs are armed. यान पूरी Minus तरह 50 स्वचालित seconds. है। Sequencers are armed. इसमें Minus ऑनबोर्ड 45 कंप्यूटर seconds. आंतरिक जांच द्वारा सभी Minus गतिविधियां 40 निश्चित कर रहे हैं PSTV और HPP open. T0 पर खुद ही S139 Minus बूस्टर के 30 प्रज्वलन seconds. का कमांड इशू करेगा। Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. PSTV SPP open. Minus 20 seconds. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Event tracking. And we have a liftoff. The PSLV-C56 first stage burning bright and the thrust is reported to be normal. जी हाँ, अभी अभी आपने देखा PSLV-C56 प्रमोशन यान का Performance normal. सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोशन मंच से और प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। यह करीबन 110 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान यह 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Normal thrust of
PS1 stage 4,800 kilonewtons. The stage is 20 meters long and 2.8 meters in diameter. इस दौरान रॉकेट अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजर रहा होता है। यह क्षेत्र काफी कठिन होता है एक रॉकेट के लिए, लेकिन इसमें SITVC और RCT की मदद से रॉकेट को अपनी दिशा बनाए रखनी होती है और वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और प्रथम चरण का प्रणोद जारी है। Presently, the launch vehicle trajectory is being tracked by SHAR stations. Operational duration for PS1 is 109 seconds. Stage separated, second stage engine started, closed loop guidance initiated. Plus 2 minutes. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक वाला विकास इंजन वाला चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are 2.5 minutes into flight and the rocket is at an altitude of 76 kilometers. The second stage has commenced its operation. It's a liquid stage that has 41 tons of propellant loading. Fuel is 2H25 and oxidizer N2O4. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ। इस चरण के दौरान ही पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया जाएगा तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत चला जाएगा। The legendary Vikas engine powers this stage and generates a maximum thrust of 800 kilonewtons. PS2 stage is 12.8 meters long and 2.8 meters in diameter. In the meantime, the rocket clears the dense atmosphere. It no longer needs to be steered to reduce aerodynamic loads and it can now be guided based on final destination with respect to its current position, marking the beginning of closed loop guidance. No dense atmosphere around, no need to carry the extra weight to protect the satellite. Payload fairing have been jettisoned. ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है, जिसमें सेंसर्स की मदद से वर्तमान की स्थिति का पता लगाकर रॉकेट अपनी अभिवृत्ति नियंत्रण तथा उद्देश्य कक्षा की ओर जाता है। PSLV का द्वितीय चरण का निष्पादन जारी है। Second stage performance normal. यह लगभग 150 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। Second stage separated, third stage ignited. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है कि द्वितीय चरण अपना प्रज्वलन काल समाप्त कर पृथक हो चुका है तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। परफॉर्मेंस नॉर्मल। तृतीय चरण HPS-3 के नाम से हम जानते हैं। यह इस चरण में 7.6 टन का प्रणोदक होता है और यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। The third stage has commenced its operation. It is a solid propellant stage. Current altitude 180 kilometers, ground range around 480 kilometers. Maximum thrust that the stage develops is 250 kilonewtons. It has 7.65 tons propellant loading. जी हाँ, यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है जिसे उच्च निष्पादन के लिए बनाया गया है। इस चरण का कार्यकाल लगभग 120 सेकंड का होगा। थर्ड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। इस चरण के अंत तक यान 220 किलोमीटर की ऊंचाई तथा सापेक्ष गति 7.6
25 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त कर चुका होगा। plus 6 minutes. SHAR station continues to track. Port Blair station has just started to acquire the rocket's position. Third stage action completed. तृतीय चरण का निष्पादन समाप्त हो चुका है। अब PS3 स्टेज यानी तृतीय चरण और चतुर्थ चरण संयुक्त रूप से यान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसे हम PS3 PS4 कोस्टिंग फेज बोलते हैं। The third stage of PSLV has completed its operation, but it will coast along with the ongoing rocket. Vehicle In the meantime, performance normal. no thrust is being imparted Plus by the 7 minutes. rocket, but the rocket is being steered. SHAR and Port Blair stations continue to track. The combined coast phase lasts for 200 seconds or until 9 minutes 42 seconds into flight. As the rocket is not thrusting, its relative velocity reduces. Meanwhile, it gains altitude. PS3 PS4 स्टेज का कोस्टिंग फेज जारी है। इसमें बिना किसी प्रज्वलन के यान प्राप्त संवेग से 115 किलोमीटर की अतिरिक्त ऊंचाई प्राप्त कर लेगा। यान की गति में कुछ गिरावट आएगी, फिर यान से तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा। तृतीय चरण के पृथकन के पश्चात Plus भी 8 minutes. चतुर्थ चरण का कोस्टिंग फेज जारी रहेगा। यह 263 सेकंड तक जारी रहेगा। Vehicle performance normal. अब तक सभी तंत्र सापेक्ष गति 7.17 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 287 किलोमीटर। To put the coasting phase in perspective for the viewers, the first stage carried the rocket till 51 kilometers. Second stage for another 118 kilometers. Third stage, next 51 kilometers, and combined coasting phase will add 118 kilometers altitude. Even after the separation of PS3, which is the next payload flight event, continue for Vehicle 263 performance seconds. Brunei Station 2 has started to track. यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है। इसमें भू स्थित ग्राउंड स्टेशन शार, पोर्ट ब्लेयर, ब्रुने और बयाक हम तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। Third stage separated. अभी अभी पुष्टि की गई, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है तथा चतुर्थ चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। Plus 10 minutes. Vehicle performance normal. यान सामान्य निष्पादन करते हुए अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। यान की गति 7.09 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 354 किलोमीटर। Current altitude 359 kilometers. DS-SAR उपग्रह सिंगापुर सरकार द्वारा ST इंजीनियरिंग द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। इस मिशन से पहले सिंगापुर के लिए PSLV-C55 द्वारा TLS-2
का सफल प्रक्षेपण किया जा चुका है। DSR एक सिंथेटिक अपर्चर रडार लिए हुए है जो कि किसी भी मौसम और किसी भी समय 1 मीटर के रिजोल्यूशन के साथ भूप्रेक्षण में सक्षम होगा। यह सैटेलाइट इमेज सिंगापुर सरकार के विभिन्न विभागों के लिए सहायक होगा। एसटी इंजीनियरिंग भी इसमें वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए इससे मल्टी मॉडल और उच्च प्रतिक्रियाशीलता इमेजरी का प्रयोग कर अपने उपभोक्ताओं को प्रदान करेगा। Vehicle performance normal. वर्तमान में चतुर्थ फेज का कोस्टिंग फेज जारी है। Plus 12 minutes. PSLV-C56 कुल 7 निर्धार लिए हुए है। इसमें मुख्य उपग्रह सिंगापुर के DS-SAR भूपेक्षण उपग्रह है। अन्य हैं 23.6 kg के आर्केड, 23 kg का पेलॉक्स AM और 13 kg के ऑर्बिटल स्ट्राइडर। अन्य 3 नैनो सैटेलाइट्स जिनका भार 10 kg से कम है, यह गैलेशिया 2, न्यूलियन नामक नितभार हैं। इन सभी सहयात्री उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाना है। Fourth stage and the payloads currently coasting. Current altitude is 432 Plus kilometers. 13 minutes. Vehicle performance normal. कोस्टिंग फेज के दौरान चतुर्थ चरण में लगे हुए थ्रस्टर्स की मदद से पिच या रोल कंट्रोल किया जाता है। The prime satellite for the mission, DS-SAR, is developed under a partnership between Defence Science and Technology Agency of Government of Singapore and ST Engineering. Once deployed and operational, it will be used to support the satellite imagery requirements of various agencies within the Government of Singapore. ST Engineering will use it for multimodal and high responsiveness imagery and geospatial services for their customers. DS-SAR carries a synthetic aperture radar Plus payload 14 minutes. developed by Israel Aerospace Industries. This satellite can provide all-weather day and night Fourth coverage. stage engine started. चतुर्थ चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह चतुर्थ चरण अंतिम चरण है PSLV का, जो मुख्य उपग्रह और सभी नितभारों को उनकी उद्दिष्ट कक्षा में लेकर जाएगा तथा अंतक्षेपित करेगा। Fourth stage performance normal. Fourth stage has commenced its operation. Twin engine based pressure fed stage developing a thrust of 7.4 kilonewtons. वर्तमान में गति 6.94 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 481 किलोमीटर। सर्वप्रथम Plus DS-SAR 15 minutes. मुख्य उपग्रह का अंतक्षेपण किया जाएगा। यह 536 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में होगा। The fourth stage is also provided with reaction control system thrusters for attitude control, and orbit change thrusters will fire post-mission to Fourth reduce stage performance altitude normal. of the spent stage to aid in early re-entry. Speaking about this payloads taking ride in this mission, the first satellite to be separated is DS-SAR. This satellite can provide all-weather day and night coverage and capable of imaging at 1 meter resolution at full polarimetry. It weighs 352 kilograms. The second satellite
New Leon is an acronym for New Space LoRaWAN Internet of Things Network. It's a 3U nanosatellite developed by New Space. It is a seed satellite for a LEO equatorial constellation providing continuous LoRaWAN IoT services. The third satellite, Orb 12 Strider, will carry the world's Stage first performance multimodal normal. all-electric propulsion engine featuring subsystems from Singapore-based Elena Orbital Astronautics and Aurora Propulsion Technologies. ऑर्ब 12 स्ट्राइडर, इसमें यह 13 केजी का उपग्रह है जो एक स्मॉल सैटेलाइट है। plus इस 17 उपग्रह को भावी पीढ़ी के प्रोपल्शन सिस्टम का तकनीकी प्रदर्शन के रूप में प्रमोशन किया जा रहा है। इसमें पहली बार मल्टी मॉडल ऑल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इंजन का प्रयोग किया जा रहा है और इसमें मल्टी स्टेज इग्निशन, कॉम्पैक्ट हॉल थ्रस्टर्स और आर्म रेजिस्टर जेट्स भी लगे हुए हैं। Fourth satellite is Glacier 2, is an educational 3U nanosatellite by National University of Singapore. Its main mission is to perform an inter-satellite link with Telios 1. गैलियस 2 एक 3U साइज का एजुकेशनल नैनो सैटेलाइट है जिसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा निर्मित किया गया है। इस उपग्रह का प्रमोशन पूर्व में भेजे गए टेलियोस 1 से अंतर उपग्रहीय संचार पथ का निर्माण करना है। यह अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए बहु स्पेक्ट्रमी इमेज लेने में भी सक्षम है। वर्तमान में चतुर्थ चरण प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। कुछ ही क्षणों में उपग्रह के उद्दिष्ट कक्षा की स्थितियां प्राप्त होते ही DS-SAR उपग्रह को अंतक्षेपित किया जाएगा। The next satellites are Scoop 2, Arcade and Velox AM. Scoop 2 is a 3U CubeSat designed and developed by a student team of Satellite Research Center, Nanyang Technological University, Singapore. Arcade is a 27U microsatellite. Satellite injection conditions are achieved. उपग्रह के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब कुछ ही क्षणों में DS-SAR उपग्रह जो कि मुख्य उपग्रह है इसका अंतक्षेपण किया जाएगा। उद्दिष्ट कक्षा है 536 किलोमीटर। सात 7.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। DS-SAR satellite separated. और यह हर्ष का पल यहाँ पर इस मिशन के मुख्य उपग्रह DS-SAR को अंतक्षेपित कर दिया गया है और इसके तुरंत बाद ही न्यू लियोन भी इस यान से पृथक हो चुका है और अपनी कक्षा में स्थापित किया जा चुका है। The prime satellite for PSLV-C56, that is DS-SAR, has been placed in its intended orbit. Thereafter, the second satellite, New Leon, also has been separated. इस घटनाक्रम में अगला है ऑर्ब 12 स्ट्राइडर उपग्रह का अंतक्षेपण। 5 more injection events awaited. Next in line is Orb 12 Strider. 12 Strider satellite separated. ऑर्ब 12 स्ट्राइडर उपग्रह को भी अंतक्षेपित कर दिया गया है उद्दिष्ट कक्षा में। We have a confirmation of the separation of Glacier Orb 12 2 satellite Strider, separated. and Glacier 2 satellite also has been separated. ऑर्ब 12 स्ट्राइडर के पश्चात ग्लेशियर 2 को भी यान से पृथक कर उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है
और इस घटनाक्रम में अगला है स्कूप 2 का सेपरेशन। Two satellites separated. यहाँ इसकी पुष्टि कर दी गई है। स्कूप 2 भी अपनी उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। Scoop 2 satellite has also been separated. It has been confirmed. Two more injection events to go. Arcade and Velox AM. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता है और अब तक सभी गतिविधियां सामान्य हैं। इस घटनाक्रम में अगला आर्केड तथा वेलॉक्स एएम का सेपरेशन हम देखेंगे। Satellite separated. Arcade satellite has been separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि कर दी गई है। आर्केड को भी उनकी उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। अब अंतिम उपग्रह वेलॉक्स एएम। Arcade carries iodine-based solid propellant propulsion module based on the Hall effect thruster for orbit maintenance during the low altitude mission. It is developed by NTU and in collaboration with Inspire Consortium. Velox AM, the seventh satellite, is a microsatellite weighing 23 kilograms for technology demonstration of Velox AM satellite separated. और वेलॉक्स एएम को भी सफलतापूर्वक उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया। All 7 satellites are separated. PSLV-C56 DS-SAR mission accomplished. Handing over to mission director. और इन सभी 7 उपग्रहों के has injected DS-SAR primary satellite and 6 co-passenger satellites into their desired orbit. PSLV-C56 DS-SAR mission is fully accomplished. Here we have a successful mission announcement that PSLV-C56 DS-SAR mission has been accomplished. As we take leave from you, please continue to stay with us for the address by Chairman ISRO Secretary DOS, Shri S. Somnath, and the mission executive. Has injected DS-SAR primary satellite and 6 co-passenger has injected DS-SAR primary satellite and 6 co-passenger has injected DS-SAR primary satellite and 6 co-passenger
has injected DS-SAR primary satellite and 6 co-passengers 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 has injected DS-SAR primary satellite and 6 co-passengers
as injected DS-SAR primary satellite and 6 co-passenger Chairman has told to do our might, to do whatever is best possible to mitigate the menace of debris in orbit. Another thing is this orbit, this precious orbit will not be occupied with a spent PS4 stage and as a debris, but we will give space for other future satellites. These are the two objectives with which we are doing this experiment. That experiment is in progress, and definitely within another 1 hour, I am very sure we will be accomplishing that experiment also. And all these things have been possible, as I told initially, it is because of the untiring, dedicated effort put in by Team ISRO, no doubt. All members of all centers have contributed. And we are getting excellent support from all our review forums, excellent guidance from all our review forums. That is what is visible in this view screens. And we are getting excellent, high quality, high reliable systems from all our industry partners. We are extremely thankful for that. And all our system development agencies, all our SR entities, all contribute to this mission. That is why everything went on as expected. And of course, our industry partners, I told, they deliver high quality systems, high reliable systems for us. This mission is a culmination of efforts put in by all of you, and also the support we get from our family, which we often take for granted, because without which we cannot manage this sort of missions. Now coming to our customer satellite, this satellite team, our Singapore team has always been with us, and coincidentally our previous mission also, we went together, we had a joyful ride to orbit, and they are enjoying the benefits of that. And as our NCL CMD has told, you have some more missions in future. I would like to imagine that we will take some 2 or 3 missions, 2 or 3 PSLV always ready, so that 2 or 3 missions of vehicles ready, so that we can always take you. We congratulate you on your achievements, and we wish you all the best. Once again, best wishes to all of you for this mission. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, and I'm very excited, Mission Director there was. So thank you once again for watching this launch, PSLV-C56 launch. Let me also offer from me the congratulations for all those partners in building PSLV from the industry, and also those who have been part of the integrating it into the subsystems and delivering it for us for this launch. And all of you know that the PSLV is now going to get industrialized. And in coming days, we will be seeing fully industry-owned PSLVs being launched, and that we are targeting early next year. But this year itself, we are going to have very exciting missions. The PSLV is going to be flying again. As I mentioned, we are going to have the mission of the Gaganyaan test vehicle, which is currently getting integrated. We are also planning to have the launch of the SSLV in its 3rd development mission, as well as the GSLV mission for launching inside 3DS. So we are very packed with our activity in this year. So until then, we announce the next launch. Thank you so much, and wish you all the very best.